आप सब हेल्दी एंड सेफ होंगे। आज की वीडियो में आई विल शेयर हाउ आई मेड नेचुरल पेंटिंग कलर्स फ्रॉम द फ्लावर्स। तो अराउंड होली के टाइम जब अचानक से धूप बहुत तेज़ होने लग गई थी तो ये फ्लावर्स ख़राब होने लग गए थे। सो देन आई थॉट व्हाई नॉट डू समथिंग विद दिस। तो मैंने गूगल किया एंड जो सबसे पहला मेथड था वो था टू बॉयल दीज पेटल्स इन वाटर एंड स्ट्रेन इट आउट एंड यूज एज द वाटर कलर्स और द पेंटिंग कलर्स। एंड इसलिए फिर मैंने भी ये ट्राई किया। तो आई स्टार्टेड विथ सेपरेटिंग द पेटल्स और डिफरेंट कलर्स की पेटल्स इन डिफरेंट लॉट्स। Although it was time taking and very tiring, but it was worth it. जब मैं ये कर रही थी तो एट फर्स्ट आई थॉट कि पर्पल टोन में कलर आएगा, बट इट एंडेड अप इन ग्रीनिश टोन। इजंट दैट अमेजिंग? नेचर इज इंडीड अ मिस्ट्री। ऑल्सो जब मैं फ्लावर्स एंड नेचर के बारे में सर्च कर रही थी गूगल पे तो मुझे कुछ कोट्स मिले, जैसे कि फ्लावर्स ऑलवेज मेक पीपल बेटर, हैप्पियर एंड मोर हेल्पफुल। Even the tiniest of flowers can have the toughest truths. Gardens and flowers have a way of bringing people together, dragging them from their homes. So after all the colors were made, I started using them. Yeah, I know it's a little shaky, but let it be. I'll take care of this next time. So I was just placing the colors here and there without thinking too much and just going with the flow. But suddenly I realized I forgot to strain the color once again. पर अब तो कुछ कर नहीं सकते थे। So without worrying or thinking about this, I continued with my flow.
वॉजंट प्लान कि मैं क्या बनाऊंगी, कैसे बनाऊंगी, बस जैसे जैसे जो जो दिमाग में आया वो बना दिया। Also, Tiny is a cute सा क्रिएचर जो कि एलियन जैसा लग रहा है, बट एक बहुत क्यूट है। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जाते जाते लाइक एंड कमेंट करना मत भूलना। Until next video, doodles, and please take care.